So as you know that when you are passing a inheritance, then you have to inherit all the method from parent class. So you can access the functionality of the parent class into the child class, and you are giving a new functionality in the child parent class function. You are given in the child class with a new one. मतलब क्या होता है ना, पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है वो आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, एंड यू कैन गिव ए न्यू फंक्शनैलिटी इन द चाइल्ड क्लास. तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट. लेकिन यहां पर क्या है, कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड. मीन्स you cannot call the parent, you cannot give a new functionality to the constructor of parent class. parent class का constructor में आप नया functionality नहीं दे सकते हो. सिर्फ आप parent class का constructor को call कर सकते हो. लेकिन चाइल्ड क्लास को दे सकते हो. Sir, one question. Yes. Constructor cannot be overridden, right? Yes. We cannot override a constructor of parent class. You cannot override a constructor of the parent class. You only Okay. call the constructor of the parent class into the child class, but there is a method is present. Okay, तो उसका एक क्या होता है ना, एक मेथड होता है. तो क्या मेथड होता है उसका ना, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में कॉल करने के लिए आपका चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन में यू हैव टू डिफाइन सुपर मेथड. ओके, तो इन द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइन you have to pass a super method, then you can call the parent class constructor into the child class, but you cannot inherit it. Okay, आप inherit नहीं कर सकते हो parent class का constructor को, only आप उसको call कर सकते हो. Okay, but remember that when you call the parent class constructor into the child class, in the first line, very first line of the constructor, child class constructor, you have to write a super method. Okay, so let me display it in the whiteboard, then you come to understand it. Now check here. Suppose I'm display class parent so I have defined here class parent. Okay, now in the parent class constructor I have to define here, in parent class I have to define a constructor. As you know that constructor name and class name is always same. Now if you want to call the parent class constructor into child, suppose I define here class child extends from parent. So in the child class constructor first line write only super method. Okay, so if you want to call the child class constructor, okay, parent class constructor into the child class, in child class constructor first line write the super method. If your parent class contain, if your parent class contain the parameter, if it is contain a parameter, suppose int a
Then when you write super method, then you have to pass a value. यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा 50, देन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा. अगर आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो INT A, यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं पास करता हूँ, so it is showing you compile time error. It is display the compile time error. So it's showing that if you want to call the parent class constructor into the child class, in child class constructor first line, write the super method. If your parent class constructor contain the parameter, then you have to pass a value. You have to pass an argument. Sir, this bill will be stored in this integer array. This 50 is stored in the integer array. Okay, but if it is contain a parameter, if it is having a INT A, then here you are not passing any value, then it shows the compile time error. Okay, so it is the way of calling the parent class constructor into the child class. If you are not write super method, then it is not working. And remember that in very first line you have to write. You cannot pass the super method in the second line. In the very first. Sir, when the child class gets executed, at first the constructor of parent class will execute, then the constructor of the child class will execute, so that the child class variables will get initialized. Yes. So that's the reason. That's the reason we are using super method in the very first line of constructor. So first the parent class is execute, then child class is able to access the parent class. अगर parent class का variable नहीं रहेगा तो child class किसको access करेगा? Okay, तो इसलिए आपको very first line में आपका constructor का जो child class का constructor का very first line में parent class constructor को call करना पड़ता है. Okay. Okay. Understood, Ankita? Sagar? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes. अगर integer के जगह में हमने दूसरा कुछ ले लिया. if you pass a string value, then you have to pass in a double quotation. Okay. बाकी मेथड सेम है लेकिन स्टोर करना जरूरी है. Yes. स्टोर में हमको एक्सेस नहीं होगा. So check here the class parent. So here we define a member variable int a. A is a member variable. Then parent. It is a parent class constructor. Class child. It is extends from parent. Class child. It is extends from parent. Then. Yes. What is the scope of parent class constructor? Is it public or default or private? It is a default here because we are using the same package. So it is a default here. Okay. Okay. So int a, then parent class constructor, child class extends from parent. Then यहाँ पर मैंने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया. तो देखो यहाँ पर मैंने सुपर कीवर्ड यूज किया. जब मैं सुपर कीवर्ड यूज करता हूँ
सुपर मेथड जब मैं यूज करूंगा तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, वो आपको दिखाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेन मेथड में सिर्फ मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा ना, आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, वो आपको दिखाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट। ओके, नाउ आई रन द फाइल। So now I go to the D drive, D colon enter. Then Java C child dot Java. Then Java child. It is showing you default constructor parent, then this is child class constructor. Now check here, if I give the default constructor as a comment line, मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट लाइन में दे देता हूं। अब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करता हूं। तो अभी अगर मैं सिर्फ सुपर मेथड के मदद से मैं उसको कॉल करूंगा, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? So it shows an error in the super method because your parent class contains the parameter, but when I write only super method, it is not executed. So that मैं अभी सुपर 5 ए वाला एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये शो करेगा, this is child class constructor. Now see that this is a parameterized constructor, value is 5, and this is a child constructor. Okay, understood? Noini? Yes, sir.
comes to the theory part of this, a subclass inherit all the Sir, voice methods. asuni. Hello, hello. 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 Again, sir. Again, sir. Again, sir. Voice asnutla. अच्छा ठीक है. A subclass inherit all the method and variable from the superclass, but a subclass doesn't inherit the constructor from the superclass. So that in the two way we call the constructor. One is you have to use the default constructor or write one or more explicit constructor. Explicit constructor means you have to define constructor with parameter. Now to invoke the parent class constructor, you must place a call to the super method in the first line of the child class constructor. You can call a specific parent constructor or by the argument that you use the super method. मतलब अगर आपका parent class constructor में कुछ पैरामीटर है, आप जब super method कॉल करोगे तो वहां पर आपको पैरामीटर देना पड़ेगा. If the parent class defines the constructor but doesn't provide no argument constructor, then a compile time error message is issued. That already I have shown you in a program. अगर आपका parent class constructor में पैरामीटर है और आप इसको कॉल करते हो, इसको ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो यहाँ पर एरर मैसेज शो करेगा. Now comes to the object class. Object class is the root of all the classes in Java. A class declaration with no extends clause, it implies that it extends from object class. Java में जितना सारा classes है, by default it is extends from object class. अगर आप simply कोई भी class define करते हो, class XYZ, class demo, that means it is extends from this object class. मतलब वो अगर किसी भी क्लास lag করছে voice আসুনি হবে. हाँ Hello. हाँ सर Sir, voice আসুନଥିଲା. ଆପଣ କିଛି କହୁଥିଲେ? हाँ. So I am defining that object class. Object class is the root of all the classes in Java. Okay, so when you define like public class employee, okay, जब आप public class employee define करते हो, it is not extends from any class. एक किसमें extends नहीं है, लेकिन invisibly और backend में ये object class से extend हुआ है. So any classes in the Java that your user defined class that you have to define, or any class that you define in the Java, so by default it is extended from the object class. Got it? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Ankita? Yes, sir. Again, sir. But Yes, sir. in this object class, there is a two method is present. One is your equals method, another is your toString method. So in an object class, the two method has present. One is equals method, another is toString method. So what is the work of it? Equal operator. So for checking the equality in Java, in the two way you can check the equality by using of equal operator or by using of equals method. दोनों में आप क्या कर सकते हो ना, इक्वालिटी चेक कर सकते हो. इक्वल ऑपरेटर में चेक हो सकता है, इक्वल्स मेथड में भी चेक हो सकता है. Then there is a question, if equal operator is used for checking the equality, then what is the work of this equal method? Equal method का क्या जरूरत है? As you know that
In Java, we store our value in a predefined data type, and you can store the value in a class object. आप class object में आप value store कर सकते हो और आप predefined data type में भी store कर सकते हो. आज Java support object orientation concept, then you represent your value through the object. Object की मदद से आप equality, object की मदद से आप value store कर सकते हो. देन ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने इतना बताया, आप वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो डायरेक्टली, और थ्रू द रेफरेंस से भी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वल इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंस है? ओके, लाइक इफ वन पर्सन इज प्रेजेंट एट द Delhi, and if you ask the person where Odisha is present or where the Bhubaneswar is present, the person is saying that in that location in Odisha the Bhubaneswar is present. Okay, and if you ask that particular where you found the Utkal University, so Utkal University is present at Bhubaneswar. So if you ask one person who is present at Kolkata and asking that where your university is present, Utkal University, is saying that at Odisha, Bhubaneswar, you can get the Utkal University. Is giving a correct reference. And one person is present at Bhubaneswar in a different location nearby the university, and if you ask that person, suppose there is a place is present, Master Canteen, railway station. If you ask that person in Bhubaneswar Master Canteen, the person is present over there, and asking where the Utkal University is present, it's saying that nearby, that you can get this university in Bhubaneswar at Bani Vihar Square. See that both the person are giving the same address. The person present at Kolkata is also giving you same address, and the person who is present at Master Canteen is giving also same address. But if you compare the distance from Kolkata to Utkal University and distance from Master Canteen to Utkal University, where the Master Canteen is nearby your university, is different. It is 2 kilometers. If you compare from Kolkata, it is nearby 450 kilometers. Both are giving a same reference. If you check that thing by using of equal operators, it gives you false. मतलब आपका भुवनेश्वर में ही बानी विहार स्क्वायर में उत्कल यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर इक्वल ऑपरेटर में हम चेक करेंगे रेफरेंस ऑफ कोलकाता पीपल एंड रेफरेंस ऑफ द मास्टर कैंटीन पीपल, it gives you false because it is calculating the distance. But in the equals method, it gives you true. इक्वल ऑपरेटर मतलब इसमें आपको फॉल्स दिखाएगा, इक्वल्स मेथड में आपको ट्रू दिखाएगा, क्योंकि दोनों सेम रेफरेंस देते हैं. यू कैन स्टोर द वैल्यू, ओके, यू कैन स्टोर द वैल्यू in Java in the two way. One, you store the value in a variable. Another, you store the value through the reference. ये दोनों के मदद से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो. लेकिन सपोज हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया a एंड b, एंड वहां पर हमने स्टोर कर दिया 10 एंड 10. इक्वल ऑपरेटर में हम चेक करेंगे, इट्स शोइंग यू करेक्ट.
बट इक्वल इक्वल मेथड में ये आपको इनकरेक्ट दिखाएगा. So I am explaining in the whiteboard, then you better understand it. I will explain it. Okay. See that. Again I explain here. So here we define two variable. One is A and B. Okay. Here I have stored two variable. That is A and B. Again I explain. Here I have stored the value A and B. In A I have stored hello. In B I have stored hello. और एक बार समझा देता हूँ. A hello, B hello. And A is a variable, B is a variable. It store in a memory allocation suppose 100. It store the memory allocation suppose 105. When you check with A equals to B, then in that cases what happened? It's showing you false. Means here your value is same, but your reference is not same. Here 100 and here 105. So equal operator checks your value as well as your location will be same. In the case of string only, जब आप string value store करते हो. Okay, क्योंकि जब string value आप store करते हो, it is a character array. यहाँ पर क्या स्टोर होता है? H E L L O एक कैरेक्टर आरे में स्टोर होता है. उसका लोकेशन भी अलग हो जाता है. 0 1 2 3 ये हमारे लिए है, लेकिन सिस्टम दूसरा नंबर एलोकेट करता है. तो इसलिए क्या करता है? कैरेक्टर वैल्यू को जब आप कंपेयर करोगे A equals to B, then it shows as false. बट इसलिए क्या होता है? हम ए जो मेमोरी है, अगर हम रेफरेंस में स्टोर करेंगे, सपोज ए को एक रेफरेंस मान लीजिए, बी को एक रेफरेंस मान लीजिए, तो ए डॉट इक्वल्स अगर हम बी करेंगे, यहां पर आपका ट्रू दिखाएगा. इक्वल्स मेथड में आपको ट्रू दिखाएगा इन द केस ऑफ स्ट्रिंग. ओके, आप वेरिएबल में स्टोर करो वैल्यू और रेफरेंस में स्टोर करो, दोनों में आपका इक्वल्स मेथड में ट्रू दिखाएगा. लेकिन इक्वल ऑपरेटर में सिर्फ जो वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करोगे, a is equals to b, then it is showing you true. अगर हम रेफरेंस में स्टोर करेंगे, सपोज 100 is equals to 105, where 100 and 105 is a reference. Okay, so in that cases it is showing you false. So it is showing you false here. So in the case of reference, it is showing you false. In the case of variable, it is showing you true. In the case of equal operator, equals method में दोनों में आपका ट्रू दिखाएगा. मतलब इक्वल ऑपरेटर में ट्रू दिखाएगा, इक्वल्स मेथड में भी ट्रू दिखाएगा. ओके, चाहे वो सर स्ट्रिंग वैल्यू या तो वेरिएबल. हाँ, it is only this thing is only applied for the string value. It is not applied for the integer. Integer में क्या होता है? डायरेक्टली वैल्यू स्टोर होता है, वो कुछ कैरेक्टर आरे में स्टोर नहीं होता है. तो इंटीजर में आपका दोनों केसेस में आपका दिखाएगा. हाँ, it is only when you compare the string value. So now I go for a program. See there, first I store the value
like string A is equals to Katak, string B equals to Katak. Now I check with equal operator. So it is showing you equals. Okay, string A equals to Katak, B is equals to Katak. Now I store the value in a reference. Okay, string A equals to new string. So we are storing the value through a object. String A equals to Katak, string B is equals to Katak. Now it is showing you not equals. देखो ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है, दिखाया नॉट इक्वल्स. बट if I execute this thing by using of equal method, if A dot equals B, so here it is showing you equals. Okay, so here it is showing you equals, and if you store in a variable also, it's showing you equals. So in the equals method, in the both the cases, if you store the value in a variable, it is showing you equals. If you store in the reference, it is showing you equals. In the case of equals method, it is showing you equals operator, it is showing you false when you are storing through a reference. Clear? Nalini, Ankita? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Chalo? Yes, sir. Okay. So today we end the classes. Okay, and Merry Christmas to all. Okay. Same to you, sir. Okay. Same to you, sir. And one thing is what